Assalamu alaikum. Hope you all are enjoying good health. I am Sidra Khurshid, and in this video I will tell you about hydrocarbon. So what are hydrocarbons? These are the compounds that are made up of carbon and hydrogen. Only carbon and hydrogen. नाम से जाहिर है hydro stands for hydrogen and carbon for carbon. डाइवर्सिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और किस वजह से वो कैटिनेशन की वजह से है. व्हाट इज कैटिनेशन? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स. कार्बन कार्बन के साथ एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स बनाता है और रिंग्स भी बनाता है. इस इन एग्जांपल्स में देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है एंड कार्बन कार्बन हैज द बॉन्ड हियर. इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर and these corners are the carbons. They show the carbons and this carbon has bond with this carbon, so on and so forth. और इसके वजह से we have ethane, propane, benzene, and all these are the hydrocarbons, and we got the variety of hydrocarbons as well just because of the catenation property of carbon. Now types of hydrocarbons. Hydrocarbons are classified into open cycle chain or acyclic hydrocarbons and closed chain or cyclic hydrocarbon. Open chain or acyclic hydrocarbons are classified into saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, they have single bond in their structures and are named as alkanes. And unsaturated hydrocarbons are further classified into alkenes and alkynes depending upon the type of bond they have. Alkenes have double bond and alkynes have triple bond in their structures. So closed chain hydrocarbons are further classified as alicyclic and aromatic. Alicyclic और acyclic में difference आप पता होना चाहिए आपको कि acyclic that is without cycle and alicyclic is the cyclic compound. Okay, alicyclic और aromatic में क्या difference है? Aromatic hydrocarbons में ये benzene का structure है, ये होना must है. वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें ये बेंजीन पाया जाएगा उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और वो तमाम कंपाउंड जो साइक्लिक हों लेकिन उनमें बेंजीन ना पाया जा रहा हो तो उनका अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या साइक्लोअल्केन्स कहा जाता है. अब यहाँ पे देखें इधर कोई ये जो सर्कल है ये बॉन्ड्स को शो करता है. वी हैव अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आपको कोई सर्कल या बॉन्ड डबल बॉन्ड शो नहीं हो रहा, so it is basically the alicyclic and this is the aromatic, and all those compounds that have benzene in these structures are named as aromatic hydrocarbons. Now open chain hydrocarbon, these have the first and last carbon far apart from each other. ये एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होते हैं, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए इनको ओपन चेन कहा जाता है. जैसा कि एक चेन लो और उसको दो एंड से पकड़ के खींच लो आप. So these open chain hydrocarbons are further classified as saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons क्या होते हैं? That have carbon-carbon single bond in their structures. यहाँ पे check करें that we have carbon single bond carbon. Make sure कि आपने हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना, वो तो हमेशा हमारे पास सिंगल ही होगा. लेकिन जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हो या उसको अल्केन्स बोला जाता है. और हमारे पास वो अगर ओपन चेन में होगा तो उसको अल्केन्स बोलेंगे, और अगर रिंग स्ट्रक्चर में होगा देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है तो उनको साइक्लोअल्केन्स कहेंगे. दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो. द कार्बन हाइड्रोकार्बन्स दैट इन विच कार्बन satisfies its valency by making single bond. Important is that the single bond is present between carbon and the carbon. Now unsaturated hydrocarbons, they have multiple bonds in their structures. What is multiple bond? Double bond and triple bond is collectively called as multiple bond. ये याद रखना, आपने जब भी कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड नेम आएगा तो आपके जहन में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि इट इज फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो अब अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उनको अल्कीन्स कहेंगे. जैसे ये है हमारे पास इथीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. तो देखो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के पास तो सिंगल बॉन्ड है, तो हम कार्बन हाइड्रोजन के तो बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं. तो जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उनको अल्कीन्स कहेंगे. जनरल एग्जाम्पल इथीन है, दो कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड उसको इथीन कहते हैं. और अल्काइंस में क्या है कि दे हैव ट्रिपल बॉन्ड. So unsaturated hydrocarbons are classified into alkenes and alkynes depending upon the types of bond they have. If they have double bond, they are called as alkenes, and if they have triple bond in their structures, they are called as alkynes, and this is ethyne.
YNE shows the triple bond, ENE shows the double bond. Okay. Closed chain hydrocarbons. Closed chains are the ring structures that are made up of mainly carbon and hydrogen. Here it is cyclopropane. This carbon, carbon. Triangle स्ट्रक्चर है, इसको साइक्लोप्रोपेन क्यों कहते हैं कि 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहा जाता है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, 5 को साइक्लोपेंटेन, 6 को साइक्लोहेक्सेन. एंड दीज आर क्लोज चेन अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. मेक श्योर कि हमारे पास अलीसाइक्लिक है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई बेंजीन रिंग नजर नहीं आ रहा. एक यहाँ पे ये देखें, कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड. 2 bonds with hydrogen, 1 bond with this carbon, and 1 bond with this carbon, and its 4 valency is satisfied. So these are called as the closed chain hydrocarbons, in which if you consider this one as a first carbon, this one last, so they are interconnected. Similarly, they have the cyclic structure, and they are called as ring compounds or closed chain hydrocarbons. Now, cyclic or ring compounds are further classified into carbocyclic and heterocyclic. फर्दर इनकी कैटेगराइजेशन वाली एरोमेटिक, इनके साइक्लिक कंपाउंड्स हो, कहीं पे भी होंगे तो वाली साइक्लिक भी होंगे, एरोमेटिक भी होंगे. तो कार्बोसाइक्लिक क्या होता है? साइकिल इज मेड अप ऑफ कार्बन. नाम से जाहिर है कि साइकिल में क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन के बॉन्ड्स कार्बन के साथ होंगे. जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है? हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास हेट्रो मीन डिफरेंट, कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं होगा, कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी पाया जाएगा, उनको हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है. Now, carbocyclic compounds की further explanation क्या है? Cyclic organic compound containing all carbon atoms in ring formation. के सारे का सारा साइकिल किससे मिलके बना होगा? कार्बन से मिलके बना होगा. और इसके टाइप्स हैं अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. अगेन अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को नॉन बेंजेनाइड भी कहा जाता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेंजेनाइड कार्बन्स भी कहा जाता है. नाउ नॉन बेंजेनाइड लैक बेंजीन रिंग इन दियर स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे दिस इज बेंजीन, इधर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही. So this is the alicyclic or non-benzenite carbocyclic compound. And here aromatic that have at least 1 benzene ring as an essential component. क्या मतलब इसका? कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन essentially एक होना जरूरी है. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जब भी किसी भी कंपाउंड में होगी तो उसको एरोमेटिक कहा जाता है. एक चीज, बेंजीन भी हमारे पास 6 कार्बन एटम है और सॉरी कंपाउंड है, और साइक्लोहेक्सेन भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. बट द डिफरेंस इज दैट in benzene we have alternate single and double bond, single bond, double bond, single bond. Here there is no alternation of single and double bond. These all are single bonds. So benzene and cyclohexane must be clearly differentiated. And now what is benzene? It has regular hexagonal structure with alternate single and double bond. As I have discussed earlier, that regular hexagon, hexa mean 6 corners, 1, 2, 3, 4, 5, 6 corners with alternate single and double bond. This is double bond, alternation with single bond, double bond, single bond, double bond, and single bond. This is the benzene. Okay. Heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds are the compounds, cyclic compounds that has atoms of at least 2 different elements as member of its ring. Same के कार्बन सिर्फ कार्बन से मिलकर नहीं बना हुआ. यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कॉर्नर पे कार्बन है, इस कॉर्नर पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, तो इसको फ्यूरैन बोलते हैं. ठीक है, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसका जनरल नेम है. सिमिलरली यहाँ पे देखो बाकी सारे कार्बन है, लेकिन एक कॉर्नर पे हमारे पास सल्फर आ गया, जिसको थायोफिन बोला जाता है, तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक है. और यहाँ पे अगेन एक डिफरेंट आ गया, नाइट्रोजन. सो दिस इज द aromatic heterocyclic compound, pyrrole. So these are heterocyclic compounds because they have different elements in the cycle. And that is all about the hydrocarbons in the general introduction. Hope you will get the idea. So Allah Hafiz and have blessed life.